CFA subjects and exams. That's so important to know what you're going to learn in the 3 levels of your qualification. इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, what is tested and what is expected of the students. Now all of these details are very very important to know before you start studying for the CFA qualification. So I'm going to tell you everything about how the CFA exams happen, so stay tuned till the very end. Now the CFA qualification, as you know, is divided into 3 levels, and तीनों level में typically आप ये subjects पढ़ते हो, as you can see on your screens. So you're studying ethics and professional standards, quantitative methods, which is statistics, economics, which is basically macro and microeconomics, financial statements analysis, so knowing how to read financial statements and analyze them, corporate issuers, which means corporate finance, equity investments, fixed income or bond markets, derivatives, alternative investments, which means other investments, and very important, portfolio planning and wealth planning, portfolio management and wealth planning, which is how to construct and manage a portfolio of investments. So these are the subjects that you study in the CFA qualification, और typically इनके क्या weightages in the exam वो भी आपको टेबल में देखने को मिल रहा है. Now, very interesting to understand कि इसको कैसे CFA इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है. तो क्या आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक पेपर देना है? नहीं, दैट्स नॉट द वे द CFA एग्जाम्स हैपन. आपका एक ही पेपर आएगा जिसमें आपके ये सभी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स कह लो विल बी टेस्टेड. ओके, सो टिपिकली द लेवल 1 पेपर इज अ मल्टीपल चॉइस पेपर एंड इट्स टिपिकली 2 hours and 15 minutes. और ऐसे आपको 2 सेशंस देने पड़ेंगे इन अ डे. सो लेट्स से देयर इज अ मॉर्निंग सेशन एंड यू आर डूइंग अ 2 hour 15 minute एग्जाम जिसमें आपके ये सब टॉपिक्स टेस्टेड है इन वन सिंगल पेपर. फिर आपको वापस एक आफ्टरनून सेशन होगा जहाँ आपके पूरे यही सब टॉपिक्स फिर टेस्ट होंगे इन अनदर पेपर ऑफ 2 hour 15 minutes. एंड यूजली द CFA इंस्टीट्यूट वुड एवरेज आउट द मार्क्स एंड देन अकॉर्डिंगली डिक्लेयर whether you are pass or fail. So level 1 exam has got multiple choice questions. Level 2 exam typically has Vignit supported multiple choice questions. Vignit is basically a case study. So there's going to be a situation or a case and then there are going to be multiple choice questions around that. And level 3 is typically got a mix of structured questions where you need to actually express, you need to write, okay, and then also there are going to be multiple choice questions. Now level 2 or level 3 maybe typically the exam is 2 hours and 15 minutes each, and दोनों levels में आपको 2 sessions होते हैं दिन के, and the same way the CFA institute will average the marks and give you a score. Now CFA exams में कोई minimum score नहीं होता है. जैसे हमारे Indian exams में ऐसा होता है ना that if you're writing a 100 mark paper it's a minimum 40 or a minimum 50 that you need to get. CFA exams are tested on a percentile system. तो आपको percentile के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा कि आप पास या फेल हो. तो यहाँ पे कोई मिनिमम मार्क्स एज सच नहीं होता है. ओके, नाउ कितनी बार एग्जाम्स होती है साल में? तो CFA लेवल 1 एग्जाम साल में 4 बार होती है, विच इज टिपिकली इन द मंथ्स ऑफ फेब, मे, अगस्त एंड नवंबर. लेवल 2 एग्जाम साल में 3 बार होती है, विच इज टिपिकली मे, अगस्त एंड नवंबर. एंड लेवल 3 एग्जाम साल में 2 बार होती है, विच इज टिपिकली इन द मंथ ऑफ फेब एंड अगस्त. So having understood these subjects that you study, obviously you're now thinking कि इसको मैं कैसे apply करूँगा? What kind of jobs I can do? What kind of roles? What kind of organizations? And what kind of money can I earn as a starter? We've got an entire video on that, and it's flashing on your screens. So please have a look at that, and you'll be able to understand the application of CFA much better.